Hello guys, this is the part 2 of DBT JRF 2024 PYQs. So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new result. This is absolutely free from your side, but this will help us grow. So first question, an athlete participating in an early morning marathon before breakfast is likely to derive most of the energy from muscles from मतलब एथलीट जो अर्ली मॉर्निंग मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा है बिफोर डूइंग हिज ब्रेकफास्ट, राइट, उसे एनर्जी कहाँ से डिराइव करेगा? ओके, उसके मसल्स बेसिकली एनर्जी कहाँ से डिराइव करेंगे? ग्लूकोज, फैट्स, कीटोन बॉडीज या प्रोटीन्स? तो इसका आंसर है फैट्स। ओके, व्हाई? बिकॉज ओवरनाइट जो ग्लूकोज का लेवल है बॉडी में ड्रॉप होता है। ओके, ग्लूकोज का लेवल मॉर्निंग में बहुत कम होता है। Thus, the next source after glucose is fats, right? And that is why only it is said that early morning exercise करना important है, right? It helps in the fat burning. Okay, जो fat हमारे बॉडी में accumulate होता है उसको burn करने में help करता है when you are doing workout in the early morning. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, spectrophotometry is a technique used for quantitative estimation of biomolecules in a solution. Yes, correct है. Reason, spectrophotometry is based on Bragg's law. Wrong. Okay, A correct है, reason wrong है. Spectrophotometry is based on Beer-Lambert's law. Okay, Beer-Lambert's law पर based होता है spectrophotometry. So, in the light of above statement, choose the correct answer from the options given below. Both A and R are correct. No. 1 and 2 wrong. Third option, A is correct, but R is not correct. Yes. Which one of the following techniques is used for detecting protein-protein interactions in vivo? Okay, in vivo protein-protein interactions को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक हेल्प करती है? सिंपल, इसका आंसर है ऑप्शन 3, ईस्ट टू हाइब्रिड assay, right? What is the purpose of using quantitative real-time PCR? क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर को यूज करने में क्या पर्पोज है? तो फर्स्ट इज क्वांटिफाई जीन एक्सप्रेशन लेवल्स बेस्ड ऑन डीएनए कंटेंट. नो. ओके, क्वांटिफाई जीन एक्सप्रेशन लेवल बेस्ड ऑन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट. यस, ऑप्शन 2 आंसर होगा. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. नो. सीक्वेंस डीएनए फ्रेगमेंट्स टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी. नो. So RT-PCR, real-time PCR, this is also known as reverse transcriptase PCR. So why reverse transcriptase? Because RNA से DNA फॉर्म होगा. ऐसे आप याद रख सकते हो. And this is important. Match the items in list 1 with list 2. Okay, match the columns easy होते हैं बहुत. From single option also you can understand. See, denaturing gradient gel electrophoresis. जो ऑप्शन डी है, that will do the melting temperature of DNA strands. So D2 D के ऑप्शन में है. ओके, इफ यू नो अबाउट आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, जो बी है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, यहाँ पे देखो इन द ऑप्शंस B3 है, B3 है, B2, B2. So from the two options you have to choose. Either B will come do the 3 and 2. So B का 2 कैसे होगा? मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए. सो B2 नहीं हो सकता. B3 कंफर्म करेक्ट है, राइट. एंड देन 3 में अगेन ऑप्शंस हैं. ओके, सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस. दिस इज, आई विल डू दिस एरोज. वेट.
Isoelectric focusing is B3, right? And the surface plasmon है A will be 4. Okay, A will be 4 and C will be 1. Single strand conformation polymorphism. So conformation difference of DNA, right? Easy. In alcoholic fermentation, CO2 is evolved during decarboxylation of pyruvic acid only, no. Formation of acetaldehyde only, no. Both decarboxylation of pyruvic acid and formation of acetaldehyde, yes. Oxidation of acetaldehyde, no. Option 3 आंसर होगा. This is from the biochemistry. During the life cycle of microbes, at which stage do they produce primary metabolites? मतलब माइक्रोब्स के लाइफ साइकिल में कौन से स्टेज में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं? So that is exponential phase. Option 2. Okay. Which one of the following statement is correct? The genome size and the number of genes are directly proportional for all species. No, ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. ओके, मतलब अगर जेनोम साइज हाई है तो नंबर ऑफ जीन्स भी ज़्यादा होंगे. जरूरी नहीं है. एंड दैट टू फॉर ऑल स्पीशीज, नॉट अ कंपल्शन. The genome size and the number of genes are directly proportional only among eukaryotes. No, अगेन ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. ओनली यूकैरियोट्स नहीं बोल सकते हम ऐसे. द जेनोम साइज एंड द नंबर ऑफ जीन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली अमंग प्रोकैरियोट्स. वी कैन से सम प्रोकैरियोट्स. In some prokaryotes it will be true, or in some eukaryotes it will be true, but not all and only. These are the extreme statements, right? Any question it may be. This you have to note. Science is not an extreme like thing. Okay. Fourth statement is genome size is not directly proportional to the number of genes across species. Yes. मतलब सब स्पीशीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो सकता, तो ये करेक्ट है. okay? कुछ प्रोकैरियोट्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो सकता है, कुछ यूकैरियोट्स में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो सकता है, बट नॉट ऑल, राइट? अगेन मैच द कॉलम है list 1 database and list 2 description. Okay, now here also I will tell you easy thing. COMIM का 1 होगा, genes and disease phenotype database. This is from the bioinformatics. Okay, C1, तो C1 इसमें है, 3 and 1 will be wrong. Okay, and अगर C1 करेक्ट है तो D3 भी करेक्ट होगा, राइट? D3 UK बायोबैंक बायोमेडिकल रिसोर्स विद जेनेटिक environmental and clinical data. B4 and B2 B GenBank है, तो 4 is nucleic acid sequence database and 2 catalog of genomic variants. तो GenBank का 4 होगा. ओके, B4 न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डेटाबेस, राइट? जीन का एक सीक्वेंस होता है जेन बैंक, तो B4 ऑप्शन 2 हमारा आंसर होगा. एंड दिस 1000 जेनोम A2, ओके, A2 will be the answer. Catalog of genomic variant 1000 genomes, तो कैटलॉग है ऑफ जेनोमिक वेरिएंट. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. Following sequence of DNA seems to form a structure. See the sequence properly. 5' to 3', right? When the third base is changed from C to G, तो third है, right? C से G किया, third वाला C. That DNA loses its structure. Okay, structure formation नहीं हो सकता. However,
if in the background of this change the 15th base, which is the third last one, अभी third last one again G है, is change from G to C, उसे भी अगर चेंज किया G से C किया, the region regains back its structure, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा when both of these are changed. The most plausible reason for this observation is, see carefully note, यहाँ पे C है, यहाँ पे G है, तो G will pair with C, right? ये तो हमें दिख रहा है from the sequence only. And then what they are telling, when we are doing the change from G to C or C to G, थर्ड वन पे C है, तो अगर C से हमने G किया एंड यहाँ पे भी G है, तो पैरिंग नहीं हो सकती, राइट? एज वेल एज इसका हमने G किया और उसका हमने C किया, तो पैरिंग होगी, रिस्टोर होगी पैरिंग. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द थर्ड बेस एंड द 15 बेस आर पैर्ड इन अ सेम लाइक स्ट्रक्चर, तो ये ही आंसर होगा. ओके, बाकी सब स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. द थर्ड एंड 15th बेस आर पार्ट ऑफ लूप लाइक स्ट्रक्चर, नो. के लूप लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे बाइंडिंग फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन तो सवाल ही नहीं आता, राइट? तो ये स्टेटमेंट को ही, क्वेश्चन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. ओके, देन अगेन थर्ड है द थर्ड 15th बेसिस हैव स्टेरिक क्लैशेस. स्टेरिक क्लैशेस कब होंगे? व्हेन देयर इज G एंड G सेम थिंग. बट अगर G है एंड C है तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ऐसे दिया ही ऑलरेडी, तो स्टेरिक क्लैशेस की भी बात यहाँ पे गलत होगी. फोर्थ स्टेटमेंट द थर्ड बेस पेयर विथ फिफ्थ बेस, अभी यहाँ पे फिफ्थ बेस की जरूरत ही नहीं है, राइट? फिफ्थ बेस इज G, बट सवाल यहाँ पे थर्ड एंड 15 बेस का चल रहा है, बीच में ही फिफ्थ बेस को घुसा दिया, तो ये भी गलत है. आगे भी दिया है 15th बेस पेयर विथ 13th वन, दिस इज नो यूज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कुछ भी दिया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा. ओके, so 10 PYQs we are discussing in every video. Main motto is to show you how is the question pattern, how are the questions asked. Okay, question का level कैसा है, right? And this will also help you for GATE exam, right? So GATE के लिए जो भी prepare कर रहा है, you can refer these videos. So that's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel. Stay tuned for the upcoming videos. Thank you.